मेरे लिए वो सब विनर्स हैं जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया और जो स्टेज पे आए और जिन्होंने परफॉर्म किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे लैकिंग है वो आपके टीचर इंशाल्लाह आपको आफ्टर डिबेट, आफ्टर जो स्पीच कंपटीशन है वो आपको बताएंगे। आप उन लैकिंग पे इंशाल्लाह काम करेंगे, तब जाके जो आपके मामलात है वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। फर्दर मैं उन बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ जो यहाँ पे खड़े होके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं दुआगो हूँ कि इस तरीके से हमारे जो हम जिस सूबे से ताल्लुक़ है हमारा बलूचिस्तान से, जिसका सबसे बड़ा मेरे नज़दीक, मेरे दिल के नज़दीक यही है कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट ना होने के बराबर है। हम लोग अगर अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं। दुनिया की बात हमसे बहुत आगे है, दुनिया हमसे बहुत आगे है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने एक ख्वाब देखा है, मेरा एक विल है, मेरा एक तमन्ना है कि मेरा हर बच्चा, मेरे बलूचिस्तान का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो। थैंक यू सो मच। And the future builders, or I must call you future reformers, not in the context of my school but in the sense of reformers. Actually, you all are reformers. You have to reform our society. And if I talk about the topics that were discussed, especially it was inflation or it was unemployment, what if it was that corporal punishment. So there could be many reasons of these all topics. And if I'm sincerely talk about these topics, so these are not cup of teas, or these are very lengthy topics to be talked about them. Actually, these are we can call them not global issues, but we can just name them that colonized issues. If I just go through that little bit history, so we can find these all problems, especially in those areas that were colonized, or we just can call them colonies. Those means students of class 8 or those who have passed their matriculation, so they must know that colonies, which areas or which countries are colonies. And जो आज यहाँ पे बच्चे आए और ख़ास करके बच्चे आए जो फर्स्ट टाइम थे, जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ख़ास करके मैं सर इमरान साहब से भी मैं बहुत खुश हुआ कि ऑलमोस्टली 1.5 मंथ में बच्चे स्टेज पे आए। यकीनन स्टेज पे आना एक बहुत बड़ी बात है। आप आए यहाँ पर, गलतियाँ करें, भूल जाए, कोई मसला नहीं है। आज भूल जाएंगे, नेक्स्ट दोबारा ट्राई करेंगे, इसके बाद फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्पीकर बनकर मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आप हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। और दूसरी बात, आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ें हासिल करने का मकसद बनाएं। वो क्या है? तालीम, 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 बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपने तालीम हासिल कर लिया, आपके पास जॉब नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास पैसा है। आज हमारे लोगों के पास पैसा है, तालीम नहीं, तो उनको ये समझ नहीं कि अपने बच्चों को कहाँ लगा लें। तो इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल करें, अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। Thank you for inviting me, Sir Imran, over here in this platform. I feel grateful that you gave such an honor to me to judge the students on the basis of their confidence, pronunciation, overall. Basically, I receive a very positive sign over here that the one who stuck over here, you people just clap. You just applauded on the beats of your clapping and just motivate them over here. This thing, I saw it for the first time over here because no one of us wanted to make any one of us who is here at this place, at this platform, to be stuck, to be overconfident, or to be below confident, and to be hesitant. So all of us really want everyone to clearly speak and deliver his or her thoughts clearly and confidently. Doing well. I would really thank and once again welcome respected director, the Pioneer School, Sir Saddam Saab, and Sir Osman Mir Saab, Principal, Future Reformers, and one and the only Sir Abdul Razik, Principal, Global Public Islamic School. And I would really appreciate the efforts and the judgment and the time of Miss Halima, who was with us, who was the judge of today's event, and all the students who came here, and Ma'am Amina from Global Islamic School, like she joined us. And finally, I would like to appreciate all the students who came here and who just
came on the stage, like rightly pointed out by Osman Saab and Sir Abdul Razik Saab and Sir Saddam Saab. Those students who came here, they are the winners. For me, winner is not the one who got position, like first, second, third. For me, the winner is the one who came here, who came on the stage and spoke something. And this is our motto. The basic motto of this academy is to give students such platform to furnish their skills, to give them opportunity to take part in such competition like speech, debate, and other competitions. So do not get dejected or disappointed if you do not get any position. Just stay positive, work hard, and keep taking part in such competitions to furnish your skills, to groom yourself, and hold the pressure of the stage. So with these words, I would like to end today's event, and I once again really thank all the distinguished guests who were with us, and they gave their precious time, and finally all the students who are here with us. And we will keep holding such events to give you a platform, to give you a chance to groom yourself and learn a lot and learn more. Thank you so much.